Okay guys, आज हम we have to discuss the chapter number 1. आज chapter number 1 को discuss करने वाले हैं, ठीक है? Chapter number 1. अच्छा, the first chapter is about introduction to the audit guidelines. ये हमारा first chapter है about guidelines. Guidelines, what the first one 1.1 purpose of guideline. What are the purposes of these guideline? हम इस guideline जो ये guideline है इनकी जो basic purpose है उनको discuss करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले you have to understand that these guidelines provide detailed instruction for auditors working on federal government audits. So the basic thing you have to understand that these guidelines are for the auditors working on federal government audits, and these guidelines actually provides the detailed instruction for whom? For auditors, those auditors who are working on federal government audit. Okay, the second thing that you have to keep in your mind that these guidelines do not replace the financial audit manual. They are not replacing the financial audit manual, but you may say that it serve as a complement to it. ये जो financial audit manual है उनको replace नहीं करेगा. These guidelines will not replace the financial audit manual, but these are complement to it. Clear? Now, if auditor want broader understanding of audit concept, standards and methodology, then they should refer to the financial auditor manual. Clear? So these guidelines are just a complement to the financial audit manual. These guidelines applicable on those auditors who's working on federal government audit, because these guidelines are detailed instruction for those auditors. वो auditor जो federal government audit करते हैं उनके लिए detailed instruction है that how to perform the audit. अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि ये financial audit manual को replace नहीं करेगा, but these are just a complement to it. Okay? Now, auditor अगर उनको broader understanding चाहिए about audit concept, standard, methodology, then the auditor should refer to the financial audit manual. Clear? अच्छा, ये these guidelines actually focus on regularity. Let me write here. इन guideline का जो element, इनका focus क्या है? अच्छा, ये जो guideline हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका फोकस क्या है? रेगुलरिटी ऑडिट. रेगुलरिटी ऑडिट. सो द फोकस ऑफ दीज गाइडलाइंस ऑन रेगुलरिटी ऑडिट. रेगुलरिटी ऑडिट में हमारे पास एक है सर्टिफिकेशन ऑडिट, और सेकंड नंबर पे हमारे पास है कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट, जिसको हम कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं. कंप्लायंस with authority audit. फिर certification audit का मतलब ये हुआ कि when auditor review, let me write here, when auditor review government's accounts for accuracy, then we call that as certification audit. जो ऑडिटर गवर्नमेंट की अकाउंट्स को रिव्यू करे फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूरेसी, देन वी कॉल दैट एज सर्टिफिकेशन ऑडिट. अगर ऑडिटर चेक करे किस चीज को, स्पेंडिंग जो भी एक्सपेंडिचर है उनको चेक करे whether the spending follows laws or you may say regulations, then we call that as a compliance audit. So जो भी expenditure है उनको आप, या जो भी spending है आप उसको चेक करें किस you just want to check whether
the spending follows laws or not, then it means that you are doing the compliance audit. Clear? So what we have understand till now, that the purpose of these guidelines is to give the detailed instruction for the auditor working on federal government audit. Clear? The second thing is that we should understand that these guidelines do not replace the financial audit manual, but you may say it is just a complement to it. Clear? Then we have discussed and we have understand that whenever auditor want broader understanding, for example audit concept के हवाले से उनको understanding चाहिए या deep understanding about standard चाहिए, methodology के हवाले से, then that should go for the financial audit manual. अच्छा, ये जो गाइडलाइन है, मैंने आपको बताया कि ये जो गाइडलाइन है, ये इनका जो मेन फोकस होता है, जो मेन कंसंट्रेशन है, वो है रेगुलरिटी ऑडिट. रेगुलरिटी ऑडिट में हमारे पास एक सर्टिफिकेशन ऑडिट है, सेकंड जो है वो है कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑडिट. सर्टिफिकेशन ऑडिट का मतलब ये हुआ कि जब ऑडिटर किसी गवर्नमेंट अकाउंट को रिव्यू करे फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूरेसी, ये एक्यूरेट है कि नहीं, तो हम उसको कहते हैं सर्टिफिकेशन ऑडिट. अगर auditor check whether the spending follows laws and regulation, then we call that is a compliance audit. Clear? अच्छा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे. अच्छा, आगे हमारे पास ये जो गाइडलाइन है, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है अबाउट preparing the permanent file, planning and conducting the audit, and evaluating and reporting the audit reason. ठीक है? So पर्पस में जो हमने अभी तक पढ़ा वो ये कि ये जो गाइडलाइन है help auditors perform federal government audit effectively by providing practical instruction. They work alongside with the financial audit manuals that we call as FAM, and focusing on regularity audit. Regularity audit पे focus इनका है, और इसके अलावा regularity audit के बारे में मैंने बताया एक certification audit है, और दूसरा आपके साथ आपके पास जो है compliance audit, जिसको compliance authority audit कहते हैं. ठीक है? अच्छा, जो इनका मेन फोकस रेगुलेटरी ऑडिट पे है, मैंने आपको ये बताया. अच्छा, गाइडिंग ये जो ऑडिटर रहते हैं उनको गाइड करते हैं थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि परमानेंट फाइल, हाउ टू प्रिपेयर द परमानेंट फाइल. प्लानिंग के हवाले से, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द ऑडिट मींस प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है आप उनको किस चीज से, ये जो ऑडिट गाइडलाइन. ठीक है? आगे हमारे पास वेट अ मिनट, cool it down. अच्छा, आगे हमारे let me read it first. If you want to read, then it. अच्छा, now we have to discuss this topic is guiding principle. Wait a minute. अच्छा, ये देखो ना. ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल में ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इस टॉपिक में है वो ये है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल है, ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है. क्या मतलब ये हुआ कि इफ एन ऑडिटर इज अनश्योर अबाउट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन दे हैव टू study, or you may say they need to refer to the financial audit manual for guidance. सेकंड पॉइंट जो इस टॉपिक में है वो है लीगल फाउंडेशन ऑफ ऑडिट. क्या मतलब ये हुआ कि an audit of the government department must follow the Auditor General Ordinance 2001 ensuring compliance with laws. So यहाँ पे देखिए financial audit manual which was issued as the issue date of the FAM by the Department of Auditor General Pakistan under the project to improve the reporting and auditing. That is a project name that is for improving the financial reporting and auditing. अच्छा, so the FAM, the financial audit manual, set out key principles for auditor to follow while conducting government audit, and it was issued by the DAGP in 2006 under the project to improve the financial reporting and auditing, and is based on the Auditor General Ordinance 2001. So we have understand two basic things about guiding principles. That FAM is actually the guiding documents,
and it was issued by DAGP. अच्छा, DAGP ने इसको इशू किया था 2006 में अंडर पेपरा, जो उनका जो प्रोजेक्ट था इम्प्रूव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटिंग के थे, अंडर उसके थे. एंड देन ये एक्चुअली बेस ऑन द ऑडिटर जनरल ऑर्डिनेंस 2001. ओके, जो मेन चीज आप लोगों की ये है वो अंडरस्टैंडिंग की लिए, वो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या है. ठीक है, सो ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेट मी इरेज दिस टॉप. क्लियर. अच्छा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग ऑडिटर के पास, ऑडिटर मस्ट बी फैमिलियर, they must have the familiarity. You say like, let me write here. Auditor ko should be familiar with what? Should be familiar with the audit theories. उनके पास knowledge होने चाहिए audit theory के हवाले से. And then they have knowledge of practices. They must have knowledge of standards and technique. These are the responsibility of auditor. So auditor must be familiar with audit theories, practice, standards and technique. ये इनको कहाँ से ये knowledge audit theory के हवाले से familiarity कैसे मिलेगी, उसके लिए they have just go and check the financial audit manual. They should understand all these things from financial audit manual. Clear? ओके, जो फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल है इसमें आपके पास है ऑडिट वर्किंग पेपर किट, ऑडिट वर्किंग पेपर किट. लेट मी राइट हियर. अच्छा, यहां आपके पास है फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल. ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल में आपको ऑडिट थ्योरी, practice, standards and techniques, these all are available in the financial audit manual, and the auditor must get familiarity with all these things from studying the financial audit manuals. Clear? Now the financial audit manual include audit working paper kits, and these working paper kits helps in maintaining proper documentation. फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल में आपके पास है ऑडिट वर्किंग पेपर किट, एंड ये जो वर्किंग पेपर किट है they will help in maintaining the proper documentation. Clear? Now, the Department of Auditor General Pakistan ensure high quality work through the quality assurance program. Clear? अच्छा, इसकी अगर आप wait a minute, ये क्यों? अच्छा, ये जो Department of Auditor General Pakistan है, ये they are just following the international organization of Supreme, we call this international organization of Supreme Auditing Institution, I think, if I'm not wrong. So Auditor General Department of General Pakistan इसको फॉलो कर रही है, किसको? International Organization of Supreme Audit. And why they are following this? Because to maintain efficiency and effectiveness and audit. Audit में efficiency और effectiveness को maintain करने के लिए Auditor General Pakistan follow the International Organization of Supreme Auditing Institution. Okay? अच्छा, ये क्वालिटी की बात हमने की, तो क्वालिटी से हमारा मतलब क्या है? क्वालिटी अश्योरेंस इसका मतलब क्या है?
What is we mean by the, इसका मतलब ये हुआ कि that you are conducting audit effectively, audit को हम effectively conduct कर रहे हैं. अच्छा, error और error को हम identify भी कर रहे हैं, ठीक है. We are identifying and also correcting the error, then it means that the assurance is getting the level of quality. इसके अलावा हमारी जो रिपोर्ट है, रिजल्ट रिपोर्टिंग जो होती है वो क्लियर है. वी आर जस्ट क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट. And at the last, you may say that we are managing resources and time constraint. These, when you achieve these objectives, then this means that the assurance is qualitative. Clear? So, एक और बात ये है कि जो quality assurance है ये एक continuous process है throughout the audit that you need to maintain. It's not just at the end. Okay? अच्छा, ये जो ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड मेथोडोलॉजी जो फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल में वो इंश्योर करती है ongoing quality check at every audit phase, ठीक है. And the quality assurance officer must verify that recommended step and following these guidelines are followed, ठीक है. So कहाँ पे थे हम? यहाँ पे, ठीक है. ये responsibility की बात हमने की, audit responsibility. Read it again. You see here, every auditor engaged in the government audit is required to familiar with the audit theories, practice, standard and technique described in the financial audit manual, which include audit working paper kit. Because of the importance of ensuring high standard of work by the department, particular attention need to be paid to the quality assurance program. Department of Auditing Pakistan quality assurance framework ensure that the work is performed efficiently and effectively as possible, and they are actually complying the international organization of supreme audit institution audit standard. Quality is performing in audit effectively, following up the errors, deviation with the rigorous evaluation constant established by the body. Therefore, the quality assurance occur throughout the phase of audit, not at the end. And it need to have to be highlighted that audit strategy methodology recommended the FAM provide for the continued quality assurance throughout. ये सब कुछ हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है. अच्छा, while reviewing the audit plan, permanent file and other phase of audit functionally entrusted with the quality. इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों का डीजी है, डायरेक्टर जनरल, must ensure audits are conducted efficiently, effectively and with a high professional competence. Clear? इसके अलावा proper supervision of the auditor is required during each assignment to maintain USA standard. So, हमने जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा वो ये कि ऑडिटर मस्ट फॉलो द फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल गाइडलाइन एंड इंश्योर दैट क्वालिटी अश्योरेंस एट एवरी ऑडिट स्टेज. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट जनरल पाकिस्तान दे आर जस्ट फॉलोइंग इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन. And why they are following that institution? Because they just want to get the efficiency and effectiveness and the audit procedure. So हमने जो स्टडी की है दो चीजों को, एक तो हमने बल्कि आप समझ लीजिए कि हमने तीन चीजों के बारे में बात की. एक तो क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू आउट द ऑडिट बात की कि ऑडिटर मस्ट चेक फॉर द फाइनेंशियल इरेगुलरिटी एट एवरी स्टेज, नॉट जस्ट इन द फाइनल रिपोर्ट. दूसरी हमने डिस्कस की सुपरविजन बाय द डायरेक्टर जनरल कि लेट्स से सीनियर ऑडिटर रिव्यू द जूनियर ऑडिटर वर्क टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल स्टैंडर्ड. क्लियर? जिसके बाद हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग द ऑडिट वर्किंग पेपर किट, यूजिंग द you may say like the audit working paper kit will help in the proper documentation. So, auditor maintain detailed records of finding, ensuring accuracy in reporting. Clear? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल टूल्स. प्रैक्टिकल टूल्स के हवाले से में हम बात करेंगे कि व्हाट डज द प्रैक्टिकल टूल मीन. सो प्रैक्टिकल टूल में इसमें कंसेप्ट ये है कि फाइंड द फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल is supported by a standard audit working paper kit.
जो आप लोगों का फेम है फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल, इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास है स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर किट्स। ठीक है, अच्छा ये स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर, इसमें आपके पास एक जनरलाइज फॉर्म्स एंड स्केड्यूल होते हैं। ठीक है, सो मीन द किट इंक्लूड जनरलाइज फॉर्म एंड स्केड्यूल, एंड वो असिस्ट करती है ऑडिट टीम को टू ensure compliance with the financial audit manual. Clear? So these working paper provide practical tool to help auditor conduct audit effectively. Clear? अच्छा, ये जो guideline है, these guideline actually help auditor apply the audit working paper kit to specific auditor types. As you see here, FAM is supported by the standard working paper kit that provides the auditor with the practical tool for conducting audit. ठीक है, इसमें ये आपके पास ऑडिट वर्किंग पेपर किट, जो स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर है, वो इस फैम को सपोर्ट करने के लिए टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद द प्रैक्टिकल टूल फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट. अच्छा, these working paper are generalized set of forms and schedule designed to help each audit team perform the audit in compliance with the principles set out by them. So ये जो स्टैंडर्ड ऑडिट ये जो किट होता है, इसमें generalized form and schedule that include a generalized form and schedule. And what are the purpose of the generalized form and schedule? That just actually assisting the audit team to ensuring compliance with the financial audit principle. अच्छा, these guideline मैंने आपको बताया कि ये auditor की they're just helping the auditor to apply the audit working paper kit or specific audit types. Then I have told you that the guidelines are designed, as you see here. These guidelines also comply with international organization of supreme auditing and institution. अच्छा, ये इसके साथ align करती है. इसका मतलब ये हुआ कि the guideline are designed to align with the that institution on auditing standard. Clear? अच्छा, ये जो guideline develop की गई है, यहाँ पे देखो, developing these guideline, the work done by the professional standard committee of this institution and at subcommittee on financial and compliance audit has also been kept in view. इसका मतलब ये हुआ, when developing of these guidelines that we are just discussing, consider the work of the professional standard committees of this organization and also its financial and compliance with the audit subcommittee. Clear? So हमने जो बेसिक चीज इस टॉपिक में पढ़ी वो ये है कि using audit working paper kit mean auditor fill out a pre-designed form to document audit findings systematically. फिर हमने पढ़ा compliance with that international organization of supreme auditing institution standard के हवाले से हमने बात की कि audit team ensure their audit step align with these international best practices. When they have to follow their audit procedures should be based on these international best practices. Clear? फिर इसकी लास्ट में हम अगर आप देख लें सॉफ्टवेयर के हवाले से बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर टूल्स acquired under this project is a part of computer as CAD, we can call it CAD, and audit management software will be required to be used by manual. इसका मतलब ये हुआ कि an auditor uses CAD to analyze large financial data set efficiently instead of manual checking. So auditor को CAD use करना चाहिए, software use करना चाहिए to analyze the large financial data efficiently and effectively, and you may say like just to saving the time instead of going through the manual checking or the manual work. Clear? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के हवाले से कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या हुई है. द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिट जनरल पाकिस्तान aim to continuously improve the audit methods. They are just trying to improve, you may say that the purpose, they are just committed to the ongoing improvement in audit methods. ठीक है, auditor और encouraged to provide feedback, उसको feedback के लिए encourage भी किया जाता है to enhance the guidelines and tools and ensuring the efficient and high quality audit. Clear? So जो continuous improvement के हवाले से बात है कि ये डिपार्टमेंट की इंटेंशन को आपको शो करे कि it is डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान intention to use the financial audit manuals, okay, audit working papers kit for continually
improving its method to ensure that highest quality audit are achieved with the maximum efficiency. ठीक है, they are continuously trying to use the FAM using the audit working paper kit, and the purpose is for getting the highest quality audit which will only be achieved through updating or using the financial audit manual and audit working paper. Now, while using these guidelines in performing audit, the auditor are encouraged to identify ways of improving either the guidelines. Okay, they are, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस these guidelines को follow कर रहे हैं for performing during audit, तो auditor को encourage किया जाता है कि आपको अगर कोई deficiency नजर आ रही है, तो you have just to identify those deficiency, and you have to suggest any sort of other things that enhance these guidelines for improving the efficiency and to give the highest quality audit. Clear? So इस हवाले से फीडबैक सबमिशन के हवाले से बात हो रही है, इसमें improving audit methods के हवाले से बात हो रही है कि किस तरह हम audit method को improve कर सकते हैं, और आपकी जो फीडबैक है, ऑडिटर की जो फीडबैक है, उसको हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करके इन गाइडलाइन को, इनकी वैल्यू को, वर्क को एनहांस कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसकी बाद जो है हमारे पास जो टॉपिक है यूजिंग द स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर. सो द ऑडिट प्रोसेस फॉलो अ स्टैंडर्ड ऑडिट साइकिल, और उसमें हमारे पास जो इंक्लूड्स है वो है जनरल ऑडिट प्लानिंग, अगर आप देख सकते हैं, डिटेल एक्टिविटी एंड रिसोर्स प्लानिंग, फील्ड वर्क, एवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग. दीज फेजेस आर कॉमन टू ऑल ऑडिट्स, और इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन इन द लेटर चैप्टर. ठीक है. So यहाँ पे दिया हुआ है, these phases are common in all audit types of audits, and overview of audit cycle is the whole is provided in chapter number 6 of the financial audit manual. Additional detail in, अच्छा सिंपली बात है. आगे आप देखो ना, टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल है, यहाँ पे देखिए हमारे पास द फाइल दैट रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑफ ईच पेज आर. सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल है, ऑडिट फाइल्स. इसमें फर्स्ट नंबर पे है आपके पास परमानेंट फाइल. परमानेंट फाइल कंटेन लॉन्ग टर्म ऑडिट इंफॉर्मेशन. जो लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम रेगुलर बेस पे अपडेट नहीं करते, उनको हम परमानेंट फाइल में रखते हैं. ठीक है. इसके बाद आपके पास जो दूसरा फाइल है वो प्लानिंग फाइल, दैट रिकॉर्ड्स डिटेल ऑफ ऑडिटिंग प्लानिंग. ऑडिट प्लानिंग के हवाले से जो रिकॉर्ड डिटेल होती है उसको हम प्लानिंग फाइल में रखते हैं. फिर वर्किंग पेपर फाइल होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ द ऑडिट. And then you have evaluation and reporting file that you may select contain audit finding and final reports. उसको हम evaluation and reporting file में जमा कर दें. ठीक है. अच्छा, इसमें ना जो key point for using working paper इसमें है कि electronic version of forms and the audit working paper kit should be used. एक तो ये चीज है. Second, you must have backup copies, both electronics and hard copy must be maintained. ठीक है. And then forms, जो form है उसमें italic note होते हैं for guidance. ठीक है. Let me read it. You see here. It's recommended that electronic version of forms given in the audit working paper are used during the conduct of the audit. ठीक है. So electronic version of forms in the audit working kit में electronics version of form जो है उसको आपने यूज करें, should use it. Okay. Backup copies आपके पास, backup copies, you should maintain the backup copies, and it should be both in electronic and hard form. Clear? अच्छा, जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स उसमें इटैलिक नोट्स होते हैं फॉर गाइडेंस. इसमें आपको दो तरह के नोट्स मिलेंगे. एक को हम कहते हैं जनरल नोट्स, एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक नोट्स, और इनका जो फॉन्ट है वो है इटैलिक, और ये गाइड ऑडिटर की गाइडेंस के लिए होगी. ठीक. अच्छा, जनरल नोट्स में ये एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है आपके पास, तो यहाँ पे स्टार्ट में या एंड में आपको जनरल नोट्स मिलेंगे. ठीक है. और जो स्पेसिफिक नोट है वो लेट्स से इसकी द डॉक्यूमेंट ऑडिट इसकी रिलेटेड है, तो जो रिलेवेंट आइटम है उनके साथ ही यू मे से दैट स्पेसिफिक नोट प्लेस नेक्स्ट टू द रिलेवेंट आइटम. ठीक है. और जो जनरल नोट होते हैं वो आपको स्टार्ट या एंड में मिलेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द ऑडिट वर्किंग पेपर किट एंश्योर अ स्ट्रक्चर ऑडिट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग फॉर्म्स एंड फाइल्स फॉर ईच ऑडिट फेज.
ठीक है। ऑडिटर मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, फॉलो नोट्स फॉर गाइडेंस एंड कीप बैकअप, ठीक है। बैकअप को आपने मेंटेन करना है, जो नोट्स दी गई है उनको भी फॉलो करना है। नाउ द ऑडिट लीडर डिसाइड द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द किट फॉर ईच ऑडिटर। सो हमने जो 3 चीजों को डिस्कस किए, एक हमने यूजिंग द प्लानिंग फाइल, मीन बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट एन ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स ऑडिट स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड टाइमलाइन इन द प्लानिंग फेज, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा, वो ये पढ़ा कि यूजिंग प्लानिंग फाइल। सेकंड थिंग मेंटेनिंग बैकअप कॉपीज, वो भी मैंने आपको बताया कि ऑडिटर एंश्योर that both the digital and printed copies of the fill-out audit form are securely stored to prevent data loss. आपके पास दोनों फॉर्म में होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डेटा बैकअप होना चाहिए और हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड थिंग जिसको हमने डिस्कस की वो ये थी कि यूजिंग अ फॉर्म टू कंप्लायंस ऑडिट, यूजिंग फॉर्म टू कंप्लायंस ऑडिट। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि ऑडिटर कंडक्टिंग अ कंप्लायंस ऑडिट यूजेस अ फॉर्म मार्क विद asterisk फ्रॉम द ऑडिट वर्किंग पेपर किट टू चेक वेदर फाइनेंशियल रूल्स आर फॉलोड, ठीक है। सो ये जो आपके पास फॉर्म है ये प्राइमरली यू मे से सपोर्ट द सर्टिफिकेशन ऑडिट, ये बेसिकली सर्टिफिकेशन ऑडिट को सपोर्ट के लिए होती है, बट जहां पे आपको asterisk मार्क नजर आए, it means that you can use that for the compliance with authority audit. So mean compliance audit के लिए भी वही नोट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आई थिंक लास्ट टॉपिक हमारे पास जो ये सब कुछ दिया हुआ है, आप यू जस्ट गो एंड रीड। अच्छा, ये देखो ना, अकाउंटेबिलिटी साइकिल। सो ये हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें फर्स्ट थिंग ये है कि अकाउंटेबिलिटी साइकिल इंश्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप ये है कि बजट एस्टिमेट सबमिशन। इसका क्या मतलब ये है कि गवर्नमेंट एजेंसी सबमिट देयर बजट एस्टिमेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ईच ईयर, ठीक है। ईच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसीव बजट एस्टिमेट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी सबमिट देयर बजटेड एस्टिमेट टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बजट एस्टिमेट रिसीव होती है, कहां से? गवर्नमेंट एजेंसी से। नाउ जब उनको ये रिसीव होती है तो फिर क्या करते हैं, बजट प्रिपरेशन पेज स्टार्ट होता है। सेकंड पेज हमारे पास है बजट प्रिपरेशन, ठीक है। बजट एस्टिमेट जब सबमिट होती है उसके बाद हमारे पास है बजट प्रिपरेशन। सो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर द एनुअल बजट considering the available resources and the government priorities. So based on the resources available, you see here, and priorities of the government, the annual budget is prepared. So budget preparation की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद ये जब प्रिपरेशन बजट प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद इसको हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए पेश करते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, थर्ड स्टेप। सो द पार्लियामेंट रिव्यू एंड अप्रूव द बजट। उसके बाद पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है, उसको रिव्यू करती है, उसके बाद अप्रूव करती है। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंडिचर अथॉराइजेशन। अच्छा, ये देखो, पार्लियामेंट अप्रूव द बजट, देन उसके बाद एक्सपेंडिचर अथॉराइजेशन है जो स्टेप नंबर 4 है। उसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सैंक्शन एंड ऑथोराइज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। So you see here the principal accounting principal sanction the expenditure and authorize the expenditure. Clear? Then the fifth step is financial statement preparation. Financial statement, the controller general of accounts, controller general जिसको हम कहते हैं CGA of account, prepare annual financial statement through AGPR and EAO. AGPR means Accountant General Pakistan Revenue for centralized accounting entity. This one is for centralized accounting entities. And PAO, that is for the self accounting entity. Okay. Now you see here, the Accountant General of account, the Controller General of account is responsible for the preparation of annual financial statement
and this task is accomplished through Accountant General of Pakistan Revenue, who has primary responsibility for the disbursement, keeping a record of transaction, and the preparation of annual financial statement of the federal, provincial, and district government for centralized accounting entity. In case of self-accounting entity, the task is accomplished by the EAO. Clear? Now, उसके बाद स्टेप नंबर 6, जो आपके पास 6 नंबर स्टेप है, वो है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ईच ईयर the Auditor General of Pakistan certify the financial statement of federal, provincial, and district. So step number 6 is audit of financial statement. So the Auditor General of Pakistan certified the financial statement of federal, provincial, and district government. And the last one is the review and accountability phase. That is, audited financial statement and audit reports are presented before the National Assembly, okay, and then review by the Public Account Committee (PSC), and PSC report back to the respective assembly. So if you see here, देखो यहाँ पे audited financial statement and audit report are led before the National Assembly, and these reports are then discussed in the Public Account Committees (PSC), who then report back to the National Assembly and the Provincial Assembly. So हमने जो accountability cycle में पढ़ा कि accountability cycle ensure करती है that the government spending is planned, approved, executed, audited, and reviewed transparently. अच्छा, इसके अलावा it's involved budget preparation. We will discuss this, financial reporting, auditing, and parliamentary oversight to the PSC. Clear? So जो main चीजें इस टॉपिक में हमने पढ़ी, budget approved by the parliament discuss किया, audit certification by the Auditor General, and then the third thing we have discussed, the Public Account Committee review. So the parliament, if the parliament reject a proposed increase in the, let's say, in the defense spending, and reallocate fund to the allocation, so we call that budget approved by the parliament or not. So when they approve this, okay, fine. Now the Auditor General find discrepancy in the ministry financial statement and report them to the PSC, so we call that audit certification by the Auditor General. Clear? In the last Public Account Committee review के बारे में हमने बात की कि the PSC examine the audit reports and orders investigation into irregular spending of the government departments. So if there is any irregularity, then they just and they are just order for the investigation and other thing like that. Okay, so आज हमने just finished chapter number 1. Yes, this is chapter number 1. So this is the end. We have discussed a very detail the purpose. हमने purpose को भी discuss किया, guideline की purpose को हमने properly discuss की. इसके अलावा हमने बात की रेगुलरिटी ऑडिट के हवाले से सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस की, ठीक है. इसके अलावा हमने जो सेकंड टॉपिक था वो था गाइडिंग प्रिंसिपल्स, फैम्स के हवाले से बात की. फिर हमने डिस्कस की ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी फैमिलियरिटी हवाले से कि व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू बी क्लियर विद व्हेन गोइंग फॉर ऑडिट. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सम प्रैक्टिकल टूल्स. We have talked about the CAD, the softwares, the guidelines that the Auditor General of Pakistan follow, international accounting standard के हवाले से हमने बात की, international organization. इसके अलावा हमने वर्किंग पेपर की बात की, वर्किंग पेपर कैट्स के हवाले से बात की. एंड द लास्ट हमने जो आई थिंक पढ़ा वो था accountability cycle. Inshallah, we will discuss chapter number 2 and the lecture number 2. Okay, thank you for watching.